and welcome to my channel Study Circle. I am Kashika और आज हम क्लास 10th की पोएम कवर करेंगे which is A Tiger in the Zoo. Before we get started, do share the video, please hit the like button and now let's get started. This poem is written by Leslie Norris. First, let's go through the central idea of the poem. So the poem A Tiger in the Zoo, it revolves around the mental condition of a caged tiger. ये कंपेयर करता है अ लाइफ ऑफ टाइगर की इन द ज़ू एंड इट्स लाइफ इन द नेचुरल हैबिटेट विच इज़ द जंगल्स. तो ये एक कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, टाइगर के बारे में बता रहा है कि कैसे टाइगर केज में है और अगर वो जंगल में होता तो वो कैसा होता. तो ये हमें दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता रहा है. हम सबको पता है कि टाइगर इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, राइट? इट्स अ फेरोशियस एनिमल. बट जब वो केज में होता है तो वो कैसे हेल्पलेस हो जाता है, उसकी फ्रीडम जो है उससे छीन ली जाती है. तो ये भी हम पढ़ेंगे इस पोएम में. तो नाउ लेट्स बिगिन. Stanza 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the paths of velvet quiet in his quiet rage. So basically इस स्टैंजा के लिए जो टाइगर है वो लॉक्ड है इन अ कॉन्क्रीट सेल इन अ ज़ू. एक स्मॉल केज में है और टाइगर जो है वो हार्डली कुछ स्टेप्स ले सकता है केज में. वो स्लोली मूव कर रहा है अप एंड डाउन इन हिज केज. He has sharp and clear stripes on his body and they are bright in color. His pads are velvet soft. Pads here are the soft part under the foot of the tiger. Tiger के जो foot है उसके नीचे बहुत soft part जो होता है. That is why it is said pads of velvet, right? Rather the strength a tiger has, he lies now imprisoned behind the bars. The tiger is angry and is full of rage, but he is quiet. Why? Because he is helpless in the cage. Now, before moving to the next stanza, I would love to tell you that end में after explaining the poem मैं आपको इसके पूरे word meanings जो हैं वो provide करूँगी और जितने भी इस poem poetic devices use हुए हैं poem में वो भी मैं आपको provide करूँगी. So now let's move towards the stanza 2. So stanza 2 says, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब इस stanza में poet बता रहे हैं कि कैसे टाइगर जो कि अभी imprisoned है, अगर वो imprisoned नहीं होता तो कैसा होता. तो the poet says that the poor tiger should have been in the natural habitat. कहाँ पे होना चाहिए? वो जंगल में होना चाहिए. हंटिंग कर रहा होना चाहिए, रेस्टिंग करना होना चाहिए. Then at this hour of the night वो क्या कर रहा होता? क्या पता वो शैडोज़ में होता ट्रीज़ की, चुपचाप वहाँ बैठा होता या फिर लॉन्ग ग्रासेस में होता. क्यों? या फिर वो वाटर होल के पास होता. ही वुड बी वेटिंग फॉर सम डियर टू पास, राइट, फॉर हिज फूड टू हंट द डियर. तो वो वहाँ बैठा होगा. दस ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हैवी फीस्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो थर्ड स्टैंजा में भी वो यही बता रहा है कि जंगल में अगर टाइगर होता तो क्या कर रहा होता. He would be snarling around the houses. Snarling is when the tiger is angry and he makes sounds, the warning sounds बनाता है. That is snarling. तो वो snarling, he would be snarling around the houses at the jungle's edge, as the jungle's edge, जंगल के edge पे, जिससे कि वो टेरराइज कर सके विलेज को. फाइन. फिर bearing his white fangs. bearing is showing, bearing here is showing, bearing his white fangs, his claws. Fangs are the sharp teeth, the front teeth of a tiger which are very sharp, okay, and long. तो वो दिखा रहा होता और उसके क्लॉज को वो दिखा रहा होता.
ये सब चीज़ जब वो कर रहा होता तो विलेज को वो टेरराइज कर रहा होता। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि अगर हम ऐसे ही कंटिन्यूसली जंगल्स को हम फॉरेस्ट को हम ख़त्म करते रहे तो क्या पता जो उनका नेचुरल हैबिटेट जो हम टाइगर्स का या एनिमल्स का जो हम छीन रहे हैं वो फोर्स हो जाएंगे टू कम टू द टाउन्स एंड द विलेजेस फॉर देयर फूड, which is not good, right? Okay, now coming to stanza 4, wherein poet says, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो द पोएट है वो इस स्टैंजा में बता रहा है कि वो देख रहा है कि टाइगर जो है वो लॉक्ड है इन अ कॉन्क्रीट सेल इन द जू। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रिजन बिहाइंड द बार्स, राइट। इतनी स्ट्रेंथ है फिर भी, लेकिन अभी तो वो केज में है ना। तो वेरी स्लोली और साइलेंटली जो है वो टाइगर जो है मूव कर रहा है अपने अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द केज। वो एंग्रीली मूव कर रहा है, थ्रेटनिंग मैनर में मूव कर रहा है, बट अगेन ही इज़ हेल्पलेस, ही कांट डू एनीथिंग, राइट। सो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज एंड ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स। तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि विजिटर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ही इज़ एंग्रीली जस्ट मूविंग, ही इज़ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। प्लस क्योंकि वहाँ विजिटर्स आते रहते हैं तो टाइगर को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता उनकी वजह से, राइट। So now moving to the last stanza of the poem, which is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. टाइगर पूरे दिन डिस्टर्ब रहता है बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, उसे कोई रेस्ट नहीं मिलता। इवन नाइट के टाइम पे भी वो डिस्टर्ब ही रहता है बिकॉज ऑफ द नॉइजेज़। नॉइजेज़ किस चीज़ की हैं? पेट्रोलिंग कार्स की। तो टाइगर के पास और कुछ नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल द होप एंड ही फील्स वेरी हेल्पलेस। तो वो क्या करता है, वो स्टेयर करता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, द ब्राइट शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। उससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो वो स्टेयर कर रहा होता है स्टार्स को। इट सीम्स दैट ही इज़ लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्फर्ट एंड होप इन दीज स्टार्स, ठीक है। Now, yeah, when he's staring with his brilliant eyes at the brilliant stars, so it shows that the tiger still hopes for the day कि one day will come when he would be able to run free in the forest and live in the natural surroundings, run in the green grass and hunt for the animals. Fine. So he still thinks कि one day would be there for his freedom. So now our poems end. Let's move to the poetic devices which are used in the poem. So first poetic device used in the poem is repetition. Repetition, we can see that in the stanza it is written velvet quiet and then it is written quiet rage. In stanza 1, if we see lines third and fourth, you see velvet quiet and quiet rage. Repetition is used because the words are repeated. Quiet word is repeated. Now in the stanza 5, the last stanza, we can see again in the last two lines that brilliant eyes, brilliant stars. So the word brilliant is repeated, so repetition is used. Now moving towards our second poetic device, which is alliteration. So stanza 1 में अगर हम देखें फर्स्ट लाइन जो है, he stalks in his vivid stripes. So stalks and stripes. So we can say that SS is repeated. So here alliteration is used. Now next is stanza 4. Again the first line, but he is locked in a concrete cell. We see the words concrete and cell. CC, they are being repeated. So here also alliteration is used. Now coming to the rhyme scheme of the poem. If we talk about the rhyme scheme, everybody would be knowing about the rhyme scheme. So the rhyme scheme for the first, second and fifth stanza is A, B, C, D. And for the third and the fifth stanza, the rhyme scheme is A, B, C, D. Now talking about the word meanings of this poem, let's talk about the words which are used in stanza 1. First word is stalks.
Stalks here means to move quietly and slowly in a threatening way. किसी को threaten करने कितने तरीके से जब आप move करते हो slowly और quietly, that is stalks. And second word is vivid. Vivid means bright and clear. The third word is stripes. Stripes here means long narrow bands. Then pads means, I told you earlier also, the soft part under the foot of the tiger. Then next is rage. Rage means anger. Simple. Now if I talk about stanza 2, तो उसके words जो हैं, first is lurking. Lurking means hiding, छुपना. Then sliding means moving. Everybody know what is sliding. Then is hole. Hole here means a pool. Fine. And plump means chubby. Chubby or fat. Fine. So यहाँ पे यूज़ किया गया है plump deer यानी कि flat deer fat deer, right? और near the water hole, तो यहाँ पे hole का मतलब है pool, छोटा सा pool, pond type. Next, stanza 3 के words. First is snarling. Snarling is to make an angry and warning sound, as I told you. फिर है bearing. Bearing means to show. Fangs are the two long sharp teeth at the front of the mouth of some animals. Then is terrorizing. Terrorizing means frightening or threatening to create fear. Fine. फिर stanza 4 के words are concrete cell. Concrete cell is a very small and unpleasant cage. Then stalking. Stalking means moving slowly, again as I told you earlier also, in quietly in a threatening way. Then stanza 5, last stanza. Patrolling means to go around an area at regular times to check that it is safe. So then is brilliant. Brilliant is very bright. Here brilliant means very bright. Okay. So this was all for today's video. Thank you so much for watching. Do share the video. Don't forget to hit the like button, and we'll meet you in the next video soon.